Advocate General is joining from. Yes. तो मतलब प्रैक्टिकल में तो पूछा Followed in this matter, followed on the last date of hearing, Lordship was kind enough to ask me about the IA with respect to the vacating of stay application. Well, that IA is 2072 of 2023, my lord. And this IA was filed on 14th of March 2023. 2072 of 2023, and it was filed on 14th of March. बताइए. This No, is my lord, application under Order 39 Rule 4 CPC. जब ये निकालना 39 4 CPC क्या है? Yes. Yes. Your Lordship may kindly appreciate, my lord. Here, my lord, the main issue which is raised in this writ petition is
that my lord, by challenging the annexure P1, P2 and annexure P8, my lord, the issue which is raised is that university is not having any legal competence to grant affiliation retrospectively. Now, this is primarily, my lord, this issue is raised in the writ petition. Now, my lord, my respectful submission is that, my lord, approximately 20,000 students, they are ready to take up the examination. And, my lord, the Honorable Court was kind enough to... Before you further proceed on the equitable argument, please tell us, these 20,000 students have taken the entire course for the entire year. You show me the proof of that fact. Yes, yes. Because 20,000 students, if have taken the examination, and there is a CBI report that except these 70 colleges which have got protection of the Supreme Court, the remaining colleges are under the surveillance or vigilance of the CBI, which is undertaking the complete inquiry. Now your own officer who had appeared before this court at the time of order was passed that CBI inquiry should be held, had expressed his inability, that he has no regard as regards these colleges related to the infrastructure, the logistics and other amenities required for imparting courses to nursing colleges. This is the state of affairs at the state level by the MP Nursing Council. Now you have sprung a surprise to the public at large that now and the same was the attitude and conduct of your Director Medical Education, who did not have any documents, who did not have anything to explain except saying that I have no knowledge. I don't remember that director's name. He had given total flop show. He appeared totally oblivious even of the litigation. And the same position was with the Indian National, what is that? NIC? Indian Nursing Council. Now suddenly you people have started giving retrospective recognition, and while the inquiry is going on, and you say allow these 20,000 persons to take the examination. Now in the teeth of the fact that the CBI inquiry is still going on, how can you give recognition? There is no report of the CBI so far, and that order is not touched by Supreme Court. The Supreme Court only said those 70 colleges where the council has conducted an inquiry, that may be kept out of the purview of the High Court order. But remaining colleges are under the surveillance of the CBI. What would happen to the inquiry which we have ordered and which is going on if we permit you to give recognition and allow these 20,000 students to take the examination? Do you want to scuttle the order passed by this court? Or you want to water down the intensity of the order by giving a retrospective recognition to indiscriminately to all the colleges and saying that now the state government is conducting the wide examination for 20,000 students? Can both these things go together? Yes. My lord, either you seek indulgence of the Honorable Supreme Court, saying that we are not interested for this kind of inquiry. We are more interested that they should be given a retrospective recognition, and a student should be allowed to appear, no matter what studies they have done, where they have studied, and what kind of colleges those are. See, from the same bench, maybe combination. Can we still address your grievance
once that earlier order is holding the field. I can understand if Supreme Court says no, this order of holding CBI inquiry should be stayed. We will say all right. Then we will enter into the merits of your contentions as regards your power related to giving retrospective recognition, as regards your power to order for examination of 20,000 students without verification of whatever it is there. The first question is, what would happen to that inquiry, which is still going on? Yes, sir. Your Lordship may kindly appreciate, my Lord, that inquiry is going on. But here, my Lord, so far as the issue which is raised in this writ petition is concerned, my most humble submission is, my Lord, so, my Lord, we need to look into the Statute 26, which deals with the affiliation. So therefore, you propose not to answer the first question. I will record it. No, my Lord, Because now you are travelling to the merits. Have you seen that order whereunder we have ordered for CBI inquiry? Have you seen that order? my Lord, I just go through with it. My Lord, I am bound to answer each and every query made by your Lordship, and I am because unless you go through that order and you say that this order will not come in your way of granting recognition to these colleges, it is difficult for us to address about your argument related to recognition. Yes. Unless you demonstrate that that inquiry is totally on a different count, it has nothing to do with recognition, we can always go ahead with recognition and inquiry will take its own course, and therefore you kindly hear me on the question whether the state is competent to grant retrospective recognition or not. Yes, my Lord, is right. My Lord, what I am respectfully submitting, your Lordship may kindly appreciate for a while, my Lord. My Lord, here, my Lord, the recognition has already been granted by the State Council, my Lord. That is there, my Lord. It's true, my Lord, that we are bound to face the inquiry if it is going on, my Lord. We need to approve that. You are representing whom? My Lord, in fact, my Lord, I am appealing for all the three respondents. So therefore, if it is so, then in all fairness, you should not have insisted upon this issue, because you yourself have stated before the court that you have no record, and still you are granting recognition. You please tell me one good reason that if you read that order, your own counsel has said yes, that they do not have any record. And now the same very counsel, represented by Advocate General, is saying that now we have given the retrospective recognition. Does it lie in the mouth of the State and Nursing Council to say so? Because your statement was recorded by the court. That yes, council has no record. And even the CBI, when went to the office of your nursing council, some papers were found, those were soaked with water. Mr. Vivek Khedkar was the counsel for the nursing council. He fairly stated, sir, वहाँ पे कुछ नहीं है, वो कुछ कागज पाए गए हैं जो पानी से भीगे हुए हैं. And this is what was said by the CBI also. अब वही काउंसिल कह रही है कि साहब हमने इन सारे कॉलेजेस को रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन दे दिया है.
साहब मेरा एक निवेदन है, अगर आप उचित समझे मैं तो भाई ऐसा है कि हमको, मैं उचित समझूं या अनुचित समझूं, समझाना का आपका काम है। हम तो केवल समझ के आर्डर पास, बट आई मस्ट टेल यू कि ये जो डिसीजन आपने लिया है, ये डिसीजन की ये बैकग्राउंड है। इस बैकग्राउंड में क्या निर्णय हो सकता है? अगर ऐसा होने लगेगा सिंह साहब, तो स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे वो करे, अनमाइंडफुल ऑफ व्हाट हाई कोर्ट हैज सेड। सर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता सर। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो इन ऑल फेयरनेस स्टेट गवर्नमेंट को इस प्रकार का इनडिस्क्रिमिनेट ऑर्डर पास करने से पहले कि हम सारे कॉलेजेस को रेट्रोस्पेक्टिव मोड से इनको रिकॉग्निशन देते हैं, इस बात का इल्म होना चाहिए था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको, ये बात मैंने अपनी व्यथा उस वक्त भी बताई थी ऑनरेबल एडवोकेट्स लोगों को, कि आज समझिए ये वो बच्चे हैं, इनमें से वो लोग भी हैं जो केवल परीक्षा के नाम पे फॉर्म भरे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, कॉलेजेस उनका अस्तित्व नहीं है। इसमें ऐसे लोग हैं जिन्हें कभी एक घंटे की क्लास नहीं करी है, इनके जगह कोई और लोग बैठ के परीक्षा देते हैं। अगर ये सारे बच्चों को आपने सर्टिफिकेट दे दिया तो और ये नर्सिंग स्टाफ में पूरे मध्य प्रदेश में चले गए। इमेजिन करो, एक पेशेंट जो अस्पताल में भर्ती होता है 85% समय नर्स उसका ख्याल रखती है। जिस आदमी को नर्सिंग के बारे में ना पता हो, वो आदमी या वो महिला उस पेशेंट का क्या हाल करेगी, ये किसी भी आदमी के लिए समझना मुश्किल काम नहीं है। जिसको ना ये आता हो कि कैसे हम ब्लड प्रेशर लेते हैं, कौन सी दवाएं एडमिनिस्टर करते हैं, कब करनी है, डॉक्टर के क्या है। आई मीन नेचुरली इफ यू हैव नॉट डन द कोर्स, व्हाट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव ऑफ नर्सिंग। और आपने सबको उठा करके इंडिस्क्रिमिनेटली बोल दिया था 20,000 लोगों की परीक्षा लेंगे हम। एक तरफ तो हम लोग परेशान हो रहे हैं कि पब्लिक की हेल्थ जो है सीरियसली जियोपार्डाइज हो रही है, और दूसरी तरफ आप जो है एक स्ट्रोक ऑफ पेन से सरकार ने निर्णय ले लिया साहब। यानी मुझे भी सरकार के निर्णय पे अफसोस हो रहा है। ना आप इंक्वायरी में पार्टिसिपेट, इंक्वायरी के बारे में कुछ समझ में आपको, ना इंक्वायरी को देख रहे हो, ना सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ रहे हो। हम तो सरकार में बैठे लोगों से आई एम सरप्राइज्ड कि किस टाइप के लोग सरकार चला रहे हैं, जिनको पब्लिक हेल्थ के बारे में बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। सर मेरा एक निवेदन है साहब, मैं विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कहूँगा था कि पब्लिक हेल्थ जो है, हेल्थ सर्विसेज इन दी स्टेट गवर्नमेंट इज इन सेफ हैंड सर। योर लॉर्डशिप में काइंडली अगर ये सेफ हैंड्स में है तो इन ऑल फेयरनेस आप मुझे बता दीजिए कि ये 20,000 बच्चों को आपने जो कॉलेजेस को रिकॉग्निशन दिया रेट्रोस्पेक्टिव, ये किस तरह से औचित्यपूर्ण है जब इंक्वायरी चल रही है और आपके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके बारे में। आपने किसके आधार पर इनको रिकॉग्निशन दिया? मैं ये निवेदन कर रहा था, वो सीबीआई वाला मामला आज के मामले के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, उसका रिकॉर्ड भी नहीं है। इनफैक्ट योर लॉर्डशिप में काइंडली अप्रिशिएट अगर वो मामला इसके साथ। मैं इसे जानना चाहूंगा कि आप अगर आप इस केस को उससे जोड़ना नहीं चाहते हैं तो चलिए फिर हम आपसे हर इस कॉलेज के बारे में पूछेंगे हम कि हर कॉलेज को मुझे निर्णय बताइए कि आपने क्या आपने इंस्पेक्शन किया और किस आधार पर दिया रिकॉग्निशन आपने, बताइए। You give me complete detail of every college. My lord will kindly appreciate it. My lord, naturally, Mr. Counsel, I will just a minute. I will not write on a dotted line. जी जी। अगर आप बोलते हो कि सीबीआई इंक्वायरी कोई औचित्य नहीं है इस केस का, अगर आपका ये कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो आप मुझे समझा दीजिए कि आपने इनको रिकॉग्निशन किस आधार पर दिया है। सर मैं निवेदन ये कर रहा हूँ कि सीबीआई इंक्वायरी से रिलेटेड मामला आज आपके समक्ष विचार करने नहीं है, और मैं आपको असिस्ट करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपकी बात मान गया इस बात को लेके कि आप सीबीआई इंक्वायरी का आज मुद्दा मत उठाइए आप, चलिए।
अब आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये सारे कॉलेजेस को आपने किस आधार पर रिकॉग्निशन दिया, दिखा दीजिए मेरे कागज। भाई रिकॉग्निशन देने की भी कोई प्रक्रिया है कि नहीं है, कि केवल आपके सरकार की इच्छा है? कोई प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया है कि नहीं? जी उसकी प्रक्रिया है सर। आप मुझे और इंडियन नर्सिंग काउंसिल के नॉर्म्स हैं, तो आप मुझे बता दीजिए ना। नाउ गिव मी, आई विल गो थ्रू विद ईच एंड एवरी कॉलेज। My lord, kindly, if your lordship permit me, my lord, we will refer the affidavit and attendance sheet and everything, all details which are submitted. You please first आप ऐसा करिए, आप अभी एक तरफ मुझे ये बताइए साहब, हमारी ये यार्ड स्टिक है रिगार्डिंग रिकॉग्निशन, और हमें कॉलेज वाइज समझाइए आप। जी समझाइए आप हमको साहब, हमारी ये यार्ड स्टिक्स है और हमने इस कॉलेज का ये इंस्पेक्शन किया है एज पर दीज रूल्स, और हमें ये पाया है। आप बता दीजिए सर। वो उसके लिए मैंने एफिडेविट फाइल किए हैं, आप उसको कृपा करके देखेंगे साहब। उस एफिडेविट साहब ऐसा है, हम हलफनामे पर ना जाएंगे। हमने हलफनामे बहुत देख लिए आपके, और हलफनामों को देखने के बाद ही ऑर्डर पास किया मैंने। अब मैं हलफनामे विश्वास नहीं करूंगा, अब आपके एक्शन पे विश्वास करूंगा कि हलफनामा तो एक फॉर्मेलिटी हो गया आज की तारीख में। आप मेहरबानी करके मुझे इतना दिखा दें कि साहब ये हमारी यार्ड स्टिक्स है और इतने कॉलेज को मैंने दिया है, इस कॉलेज में यही पाया है। आप एक चार्ट बना के दे दो मेरे को, और हम उसको वेरीफाई कराएंगे। आई विल आस्क द CBI टू वेरीफाई दिस फैक्ट and then I will consider your application. Sir, I bow down to the suggestion made by the Honorable Court. We will comply that, my lord. We will submit charge. But my lord, what I am respectfully submitting actually. एक बात ठीक है, एक प्रकार से आपको हमारी बात का कोई असर नहीं, आप मेरी बात कोई असर नहीं हो रहा है, तो आप अपनी बहस कर दो, हम ऑर्डर पास कर देंगे, कोई बात नहीं, आप बहस करो आप, चलो। नहीं साहब, मैं चार्ट आपने जैसा निर्देश दिया मैं उसको सबमिट करने के लिए तैयार है। सरकार बहुत जल्दी में है ना, कि ऑर्डर हो गया जल्दी कराओ भाई। बिल्कुल अभी जी साहब की एक्साइटमेंट तो है ही है थोड़ी सी, तो अब आप सुनाई दो मिनट्स में हमको क्या ऑर्डर करते हैं, करेंगे हम। I think your lordship will appreciate, my lord, that today, my lord, in fact, I appreciate the anxiety of the state, but you should also appreciate our concern. But anyway, आज अगर आप वेकेटिंग स्टे में बहस करना चाह रहे हैं तो आप कर दीजिए, बिल पास दीजिए। My lord, we are bound to be attentive for the concern shown by the Honorable Court. We honor the concern which is shown by the Honorable Court, my lord. We have your lordship में kindly कि अब आप क्या, हमने समझे जो हमारे हम लोग के मन में व्यथा बता दी, अब आप बताएं हम लोग कैसे चलें। सर इसमें मेरा निवेदन है, अगर आप रिकॉग्निशन के इशू को भी इसके साथ, तो वो वाला मामला भी इसके साथ टैग हो जाएगा और कोई भी शॉर्ट डेट पे रख दीजिए। आपने जो कहा है और उसमें मुझे एड्रेस करना है, आपने बिल्कुल सच में वो सही प्रश्न किया था कि आपने किस आधार पे। नाउ सर, 2 issues are there before your lordship. The MP State Nursing Council has granted recognition, and secondly, the university, after following that recognition, has granted affiliation as per the provisions of Statute 26. Now, my lord is putting a query that how Nursing Council has granted recognition. What were the norms which were followed by the Nursing Council? Then, my lord, for that, my lord, I need to place the chart which is directed by your lordship, my lord. We will place the chart that what norms were followed by the State Nursing Council while granting recognition. And so we want record of every college जो आपने इंस्पेक्शन करके आपने दिया है उसको। And so far as the affidavit is concerned, my lord, when affidavit is filed, my lord, if I'll file chart along with the affidavit, and if I'll appear before your lordship, my lord, I'll assure the honorable court that affidavit is proper, and whatever is mentioned in the affidavit, my lord, we will abide by that, and we will follow the contents, my lord, which are supported by the affidavit of our office. See, I tell you, Mr. Advocate General,
we always hold you in high esteem because you are the first law officer of the state. So we have no doubt about the position you hold, about the responsibility with which you argue. But the unfortunate part is that your OICs or the councils whom you represent have so far created very bad impression upon us, and that has caused embarrassment to the government also. आज ही मैं बता दूं आपको, आज ही आपके एक मसले में यहाँ पर despite order of a bench headed by Chief Justice was not complied with, the court expressed displeasure and also called upon as to why they should not be hold up for contempt for disobeying the order. The OIC and that mining officer says we cannot comply with the order. And therefore I have to issue notice to them after holding them as they have committed contempt court on the question of punishment. This is the state of affairs in these 9 districts. My lord, I am very sorry, my lord, the such kind of impression is projected before your lordship. I am very sorry, my lord, that your lordship... Everything is going on. It is all recorded in order sheets. Mr. Modi has appeared for the government. Here again, my lord, in fact, I am sorry, my lord, I am not aware with the facts and circumstances of that case in which my learned friend has appeared. No, ये तो मैंने आपको इनसे से बताई, ये गवर्नमेंट का मामला था. आप तो उस बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नर्सिंग काउंसिल को और मेडिकल एजुकेशन यूनिवर्सिटी को, जिसने कोर्ट के सामने 2 हाथ खड़े कर दिए, हमारे पास कुछ नहीं है, और वो कॉलेज बोलती है हमने रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन दे दिया है. You filed the copy of the recognition order? In fact, sir, इसमें मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा. What basis that recognition order has been passed? My lord, may kindly appreciate, my lord. In fact, I am not appearing for the Indian Nursing Council. अरे भाई, स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी अपियर हो रहा है ना. तो साहब उसका मामला अगर आप उसको भी इसके साथ क्लब करना चाहें और आपका आदेश तो मैं इस पिटीशन को इंडिपेंडेंटली सुनूंगा. मुझे आप इतना बता दें कि आपने किस आधार पे इन कॉलेजेस को रिकॉग्निशन दिया. बिल्कुल हम उसको पहले आंसर करेंगे, इस क्वेरी से पहले सेटिस्फाई करेंगे ऑनरेबल कोर्ट को, तभी मैं आगे बढ़ना चाहूंगा था. हाँ. क्योंकि उसके बाद क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग रेट्रोस्पेक्टिव रिकॉग्निशन and regarding permission to appear in the examination. ठीक है. उसका भी रिकॉर्ड होना चाहिए कि साहब हमारे इस कॉलेज में इतने बच्चे इस तारीख से एडमिट हुए हैं, इतने दिन पढ़ाई करी इन्होंने, इतने दिन कोर्स कंप्लीट हुआ, इसलिए इनकी परीक्षा होनी चाहिए. सर आप बिल्कुल ठीक है. मेरा एक निवेदन है साहब, जहाँ तक एफिलिएशन की बात है, एफिलिएशन के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहूँगा सर. स्टैट्यूट 26 में एप्लीकेशन आता है, उसमें इंस्पेक्शन टीम कॉन्स्टिट्यूट होती है, वो जाती है, एक इंस्टीट्यूट को विजिट करती है. देयर आर अप्रोक्सीमेटली 750 इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट ऑफ मध्य. एक जगह जाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल सर एफिडेविट देते हैं, पूरा डिटेल्स अटेंडेंस रजिस्टर कर देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं, सारा हमारे पास रिकॉर्ड पे रहता है साहब, और सभी कुछ वेरीफाई हम करते हैं साहब, फिर एफिलिएशन देते हैं. Your lordship to kindly appreciate our bona fide. जो आपने बात कही ना, ये बात कागजों में लिखी हुई है, हमें पता है. और ये बात अगर सामने, मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ आपसे, क्योंकि हम लोग इस मसले को बहुत गहराई से देख चुके हैं. संभवतः ये आपके लिए पहला एक्सपीरियंस है, हमारे लिए तीसरा चौथा एक्सपीरियंस है. ये पूरा रिकॉर्ड बुलवा के यहाँ पर आप विश्वास करिएगा, एमपी नर्सिंग काउंसिल ने यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड लाके रखा था सामने, और जब हमने एक कॉलेज का पूछा तो कोई कागज नहीं था, 2-2, 3-3 पेपर थे एक फाइल में. ये मैं आपको
though I am just stretching out, लेकिन मैं फैक्ट्स में बताना चाह रहा हूँ कि इसी बेंच पे in a different combination we sat and we called for record of colleges कि किसको आप रिकॉग्निशन दिया दिखाइए हमको आप. And that gentleman had no papers except saying साहब जो है सामने है आपके. इन परिस्थितियों में हम लोगों ने इंक्वायरी ऑर्डर करी थी. आप जो प्रोसीजर बता रहे हैं उसमें हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन प्रोसीजर में जो इन्होंने इंस्पेक्शन किए हैं किस डेट पे किए हैं वो तो सामने आ जाता है. मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया है इन द मैटर ऑफ इंस्पेक्शन एंड रिकॉर्डिंग और रिकॉग्निशन, भाई जब तक कि रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तब तक एफिलिएशन नहीं होगा. बिल्कुल ठीक है. तो रिकॉग्निशन की प्रक्रिया है, बता दीजिए क्या किया फैक्चुअली. मेरा विनम्रता पूर्वक सबमिशन ये है साहब कि रिकॉग्निशन मिल चुका है इसमें, लेकिन माय लॉर्ड हैज पुट अ क्वेरी that how and what procedure was followed by the state council while granting recognition. This is what my lord has said. हाँ, एक चीज ध्यान दे, आप उनसे पूछिएगा इनसे कि इन्होंने रिकॉग्निशन कब ग्रांट किया भाई ये. जी जी, वो आपका ये निर्देश है साहब, क्योंकि इस पूरी पिटीशन में मेरा एक निवेदन है साहब, उसको आप अगर ये इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन my lord, the sole issue, the moot question which is raised in the public interest litigation is that whether there is any legal competence with the medical university to grant retrospective affiliation. Now this is the issue which is raised in the writ petition, and my lord, I need to address the honourable court and assist the honourable court on this issue only. But today, my lord, during the course of the argument, your lordship was kind enough to direct me to satisfy the honourable court how recognition was granted by the nursing council. My lord, we will satisfy the honourable court on this issue also. And Mr. Singh, the question which we have posed has direct bearing on the primary issue as to whether the medical council or that medical education department, what do we call it, can grant affiliation indiscriminately to all the colleges across the state with retrospective effect. Yes. Because see, your act of affiliation is not an empty formality. Because you are affiliating them so that you may permit the students to appear in the examination. That's true. And this affiliation has a bearing because you would be permitting those persons who are supposed to have completed the course. Therefore, affiliation will not, just because some college has been given recognition, this by itself would not be justified action for giving affiliation. You also inspect, as in normal parlance, that while you are according affiliation, you verify how many students you have admitted, how many students have attended the classes, because you are giving enrollment to each and every student who appear in the examination. So this verification is also very important to be done by the medical education department while giving affiliation. Yes. Recognition, and I tell you, both have different criteria. So far recognition is concerned, recognition is given by the council by ensuring, yes, this college is in existence, this college has required infrastructure, this college has required departments, teaching staff, the training center, etc., etc. The rules prescribed. This is for the recognition. Now, the university which grants affiliation will verify that how many students have you admitted, how many students have been imparted the instructions and training, and then therefore they are eligible for issuance of enrollment numbers. Yes.
अब अगर ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए अब हम ये देखें कि साहब वन फाइन मॉर्निंग all colleges in the state have been given retrospective affiliation without ascertaining the fact whether all those colleges have been given the recognition also or not. आपने एफिलिएशन तो दे दिया, लेकिन ये वेरीफाई किया आपने कि बिफोर एफिलिएशन ये सारे कॉलेजेस पास पे वैलिड रिकॉग्निशन है कि नहीं है? भाई एफिलिएशन तो देना ठीक है, आपने कह दिया, हम मान भी जाएं कुछ हद तक कि यू हैव पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन एफिलिएशन देने के पहले रिकॉग्निशन भी तो होना चाहिए। रिकॉग्निशन इस केस में है मेरा ये आप जो मैं सही भी हो तो हम जरा उसको देख तो लें किसके आधार पे मिला उनको रिकॉग्निशन। सर मेरा एक निवेदन, आप जो बोलेंगे मुझे मान्य है, मेरा एक निवेदन है सर। आज इशू, one of the issue which is consideration before your lordship through this public interest litigation is that whether medical university is having legal competence to grant retrospective affiliation or not. So here, my lord, in this writ petition, there is no issue raised with regard to granting of recognition. Now, my lord, when I am submitting this, it would not mean that my lord cannot make this kind of query. My lord can make this query, and I am bound to satisfy the query made by the honorable court. Our queries are not because of our choice. Our query is only looking to the public interest. See, it's a public interest litigation. Yes, it is not a private litigation. So we need to know, we need to also appreciate, all of us need to appreciate the ramifications of this litigation. Because there are many times, see what happens, many a times it is found in PILs that issue raises little, but it had the direct bearing on the public, and therefore courts even have disallowed the petitioners to withdraw the writ petitions because serious public interest was involved. You know that Narayan's case, that with the CBI that Hawala matter, Vidit Narayan's case. The Supreme Court declined to withdraw the petition because public interest was involved. And we have no fancy to say that you don't do this, don't do that. Our serious concern is about the public health and public interest. It is indeed we have no. It is indeed a public interest which is in our mind. And the moment you satisfy us that, see, I don't want to, let us not be driven with the impression that for some extraneous considerations, these 20,000 students have been given the permission to take the examination. I want that you to clarify this, because we have serious apprehension in that behalf. My lord, let me assure this honorable court, my lord, that the state is very serious and deeply concerned with the health services, and they are in safe hands. Now, this is what I am respectfully submitting. But my lord has made specific query. What norms you have followed while granting recognition? As simple. Well, I need to answer it. But my lord, at the same time, I'll answer that query. But my lord, I am assuring this honorable court that the state is equally concerned with the health services of the state, my lord, and they are in the safe hand. This is what I am respectfully submitting. No, but that's a very good. I mean, we have no reason to doubt what the state's intentions are. But all said and done, looking to the facts on record, we have this apprehension. Therefore, you have to dispel that apprehension by showing the bona fides. I need to address it, and I'll address it. Show us the bona fides, and then we will take up this. I mean, no wonder you take up case on day-to-day basis, but you please satisfy us regarding the recognition
genuineness of students and the procedure for affiliation. Sure. All these aspects. I'm only concerned with the genuineness of the procedures, genuineness of the actions, in the matter of recognition, in the matter of education, in the matter of affiliation. I want genuine students only to appear in the examination and none else. Yes. Our only concern is only genuine students should be allowed to take the examination, and not under a camouflaged, not in a camouflaged manner to all those persons who have never gone to the college, who have never studied, and now are trying to enter into this examination. No wonder through some impersonated persons. इतना आप ख्याल रख लीजिए. I will be very happy if government is equally concerned as we are concerned regarding the genuineness of the students and the genuine existence of the colleges and the procedure followed in the matter of affiliation. जी. इतना मुझे आप बता दीजिए. Why should we doubt the government? We are always with the government in public matters, provided public interest is served. In fact, my lord, I am bound to answer all these queries, my lord, and I'll assist the Honorable Court in a better manner, my lord, with all the necessary details regarding grant of recognition. And, my lord, although we have doubted genuineness of this public interest litigation, but I'm not going into it. But we have raised serious question with regard to genuineness of public interest litigation. Maybe by conducting 2 or 3 blood donations, lawyer cannot say that he's having a public interest antecedents and he cannot maintain this PIL. My lord, I'm unaware whether it is sponsored litigation by such institutions, my lord, which may not have got the affiliation or recognition. But I'm sorry, I'm not going into all these things. But we have raised these questions, my lord, with regard to the genuineness of PIL. But, my lord, I'll address the Honorable Court on the issue. You will be free to address us on all the issues you have raised. We will hear the petitioner also, we will hear you also. And our queries so far have been because of the fact that in earlier round of litigation, there has been protracted hearing for 3 or 4 days, which led to passing of that order, and that is why we have this knowledge. And that is why we express our displeasure and also surprise as to how government suddenly rose like this and given recognition and affiliation retrospectively. And that too indiscriminately to all the colleges across the state. This really concern our mind. Not because petitioner came here or petitioner is a busybody or something like that. Our concern was that how government has acted in such a, prima facie, in a slipshod manner and in a hot haste. That was the concern, and that is why we normally don't interfere in such matters, because ultimately those genuine students also suffer because of this order. All said and done, we have to also bear in mind that along with genuine students, there may not be such number of persons who otherwise are not even eligible, what to talk of exemption, even to fit to be admitted to the college. और इसका आपने देखा होगा कि ये ग्वालियर के ही किस्से हैं कि 2-2 रूम्स में कॉलेज चले हैं यहाँ पे, 2-2 रूम्स में. ऐसी हालत है. इट्स अ वेरी पैथेटिक कंडीशन. आप एग्जामिन करिए उसको. आप एक रूम में कॉलेज चल रहा है और किसी को दे रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं. रोज आना पिटीशंस आती हैं यहाँ पर. साहब देखिए, हमको दे दिया और वापस ले लिया, उसको दे दिया, उसके पास कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है. आप तो ग्राउंड रियलिटी देखिए तो क्या पोजीशन है वहाँ की. हमें तो ग्वालियर के ही पिटीशंस देख के आपको मैं अपने बता रहा हूँ. क्या और पार्ट ऑफ स्टेट में हो रहा हो, आई डू नॉट नो. मैं सर इसको आई डोंट, बिकॉज यू आर द पर्सन हु कैन डू इट आल्सो. मेरा निवेदन इतना है साहब कि कुछ अपवाद हो सकते हैं.
लेकिन सर ये पर्याप्त नहीं है पूरे स्टेट के खिलाफ या विरुद्ध अवधारणा निकालने का। मेरा कुछ अपराध हुआ होगा कहीं, अगर वो प्रीवियस राउंड ऑफ लिटिगेशन में ऐसी बातें आई होंगी, आप तो निश्चित रूप से आपका ये कहना ठीक है था कि हमको इस इशू को एड्रेस करना चाहिए। एक भी क्यों ऐसा उदाहरण आया क्योंकि में आया? हाँ, क्योंकि एक भी उदाहरण, क्योंकि जो आपके काउंसिल के जो ऑफिसर थे जी, और जो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ऑफिसर थे जी भाई, वो तो स्टेट में एक ही होते हैं ना, काउंसिल भी एक ही है और मेडिकल एजुकेशन वाला भी एक ही होता है। क्या डीएमई होता, क्या कहलाता है वो? बिल्कुल। दोनों लोगों की हालत तो ऐसी थी कि वो तो जैसे मौका पाए और भागे यहाँ से। अब उनके बारे में हम क्या कहें आपसे? हमारे लोगों की लाचारी है, क्योंकि हम लोग वी आर एडोर्निंग अ चेयर ऑफ जस्टिस and we have to see the welfare of the society. जी, we cannot ignore or overlook the public interest of a nature which affects the health of the public at large. हम आपके साथ में हैं, हम तो सरकार के साथ में हैं कि जितने भी पब्लिक से संबंधित सर्विसेज हैं सब सुचारू रूप से चलें और पब्लिक तक पहुँचें। इसीलिए हम लोग अपनी बेंच पे स्पेशली उन पीआईएल्स को इंकरेज करते ही नहीं हैं जिससे आपके डेवलपमेंट की प्रोसेस कोई हर्डल हो या कोई पब्लिक इंटरेस्ट में हो रहा हो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो। वी आर वेरी रिलक्टेंट टू entertain public interest litigations. First we see the public interest, then we see the endeavors of the government, and then we see whether this man is bona fide or not. Normally we do not interfere. That is our approach and the right approach, because we should help the government ensuring that public service is served in all respects, be it health, education, social welfare, economic development and other things. After all, we all are there, we owe our duty to the public at large. We all are for the public. We all work for the public. अब आज पब्लिक का ट्रस्ट नहीं होगा, पब्लिक का फेथ नहीं होगा, तो हम लोग का एग्जिस्टेंस क्या है? We don't work for individuals in particular. Primarily we work for the public. And because we are here, because public has reposed trust and faith upon us. And we must rise to the occasion to ensure that faith and trust is contained. आज पब्लिक का डिस्ट्रस्ट हो जाएगा तो हम लोग को फिर हमारी क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी? समाज में हमें कौन पूछेगा अगर पब्लिक को ये हो गया कि हमें यहाँ न्याय नहीं मिलेगा या यहाँ पे न्याय नहीं होता है या हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो जजेस की क्या पोजीशन होगी? तो वी हैव टू इंश्योर दैट पब्लिक इंटरेस्ट इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एंड इज एड्रेस्ड इन ऑल रिस्पेक्ट्स। That is our concern. इसको कब के लिए रखना है ये बता दें। कब करना चाहते हैं आप बताएं? आप देख लीजिए, समझ लीजिए और जो सवाल उठे हैं उसका आप जब तक तैयार कर लें, 4 दिन 5 दिन 6 दिन जितना चाहते हैं आप, और जो डेट चाहेंगे वो डेट आपको हम दे भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिटीशन आप बताइए, आप भी बताइए। 25 को रख दो। 25 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 25 को डेट तो बहुत सब है नहीं अपने पास, फिक्स नहीं कोई बड़े है। 25 को लगा देते हैं जी। आप 25 को अगर सही मुनासिब समझे तो अपने मोशंस हियरिंग्स क्लियर करके 2:30 बजे रख लें एक बार, ताकि उसको आप जैसा आदेश करें। नॉर्मली वी फिनिश मोशंस बाय 12:31। आप जो जैसा आदेश करेंगे। नहीं, मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पूछ रहा हूँ। बिल्कुल आप, ताकि आप अपने मोशंस भी कर लें और फिर इसको 2:30 बजे एट ए स्ट्रेस सुन लेते हैं पूरा। ठीक है। और नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। वी विल नॉट ब्रेक द हियरिंग। जी। हाँ।
See, every college is free to approach us. We are only concerned with genuineness of the college and genuineness of the students. Are you opposing the application or support? He assisting the government Assisting the government in the matter of providing. जो बताना हो बता दीजिए. चलिए, ठीक है मिस्टर सिंह, we'll meet on 25th. जी, अच्छी.